हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे फैसेट्स ऑफ लाइफ इन लिबर्टी। इससे पहले वीडियो में पढ़ा था हमने आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यह आर्टिकल 21 का सेकंड पार्ट है वीडियो। आपने अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर 1 है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, कि हर एक इंसान का राइट होता है कि वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहे। चंद्र राजकुमारी वर्सेस पुलिस कमिश्नर हैदराबाद 1998 का केस है ये। इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द राइट टू लाइव includes right to live with human dignity or decency, and therefore holding of beauty contest is repugnant to dignity or decency of women and offends Article 21 of the Constitution। कि एक इंसान का राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, और ब्यूटी कॉन्टेस्ट को अरेंज करना वो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हो जाएगा, लाइक वुमेंस के। द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोहिबिट द कॉन्टेस्ट as objectionable performance under Section 3 of the Andhra Pradesh Objectionable Performances Prohibition Act 1956। बट आजकल तो होते हैं। हाँ। देन सेकंड केस है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है 2014 का केस। द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड देयर एक्सेस टू जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क वर टेकन एज इसेंशियल कंडीशंस टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। इसके बाद केस है नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है। सेक्शन 377 was held unconstitutional insofar as it criminalizes homosexual acts between consenting adults. Human dignity is an important consideration of this judgment because human dignity is not a straitjacket idea. Rather, it involves all those rights and freedoms which enable a person to live life without encroachment upon his or her self-respect, pride and safety। इसमें सेक्शन 337 ऑफ द आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया था बिकॉज ये होमोसेक्सुअल एक्ट्स को प्रोहिबिट करता था। इसके बाद केस है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2019 का केस है ये। ऑफेंस ऑफ अडल्ट्री अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड वुमेन्स राइट टू डिग्निटी एंड हैंस इट इन्फ्रिंज्ड आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 को के अगेंस्ट था, तो इसलिए अडल्ट्री का जो सेक्शन है सेक्शन 497 आईपीसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया था। The right to live is not restricted to mere animal existence. It means something more than just physical survival। इसके बाद सेकंड पॉइंट है राइट टू लिवलीहुड। इसमें है केस ओल्गा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986 का केस है ये। पॉपुलरली नोन एज द पेमेंट ड्वेलर्स केस। पेमेंट ड्वेलर्स केस के नाम से भी ये फेमस है। Petitioners had challenged the validity of sections 313, 313A, 314 and 497 of the Bombay Municipal Corporation Act 1888, which empowered the municipal authorities to remove their huts from pavement and public places on the ground that their removal amounted to depriving them of their right to livelihood, and hence it was violative of Article 21. It was held that the above sections of the Bombay Municipal Corporation Act were constitutional, since they imposed a reasonable restrictions on the right to livelihood of payment and slum dwellers in the interest of general public. The court took a humanistic view, and in order to minimize their hardships involved in the eviction, it directed the municipal authorities to remove them only after the end of the current monsoon season। पेमेंट ड्वेलर्स केस ओल्गा टेलीस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 1986। इसके बाद केस है राइट टू प्रिवेसी खड़ग सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द पिटिशनर खड़ग सिंह हैड बीन चार्ज्ड इन अ डेकोटी केस बट वॉज रिलीज्ड एज देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम। पिटिशनर खड़ग सिंह को चार्ज किया गया डेकोटी के केस में, बट उसे डिस्चार्ज कर दिया गया बिकॉज कोई एविडेंस नहीं था उसके अगेंस्ट में। Under the UP police regulations, the police opened a history sheet for him, and he was kept under police surveillance, which included secret picketing of his house by the police, domiciliary visits at nights, and verification of his movements and activities. The Supreme Court held that the domiciliary visits of the policeman were an invasion of the petitioner's personal liberty,
An unauthorized intervention into a person's home and disturbance caused to him is a violation of the personal liberty of the individual. Hence, the police regulation authorizing domiciliary visits was plainly violative of Article 21, as there was no laws on which it could be justified and it must be struck down as unconstitutional. इसके बाद केस है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड का 1998 का केस है. द इशू इन कंसिडरेशन वाज वेदर द disclosure made by a doctor to the fiancé of a person suffering from HIV positive amounts to infringement of right to privacy under Article 21. इस केस में क्वेश्चन था कि जो पिटिशनर की मतलब पिटिशनर की शादी होने वाली थी, तो जो डॉक्टर था उसने उसके फियांसे को बता दिया कि वो HIV पॉजिटिव है पिटिशनर. तो इसमें बताया गया कि राइट टू privacy था या नहीं था. The court held that when two fundamental rights, namely the right to privacy and that of life, clashes, the right which would advance the public morality and own public interest would alone be enforced through the process of court. Justice K.S. Puttaswamy, RTD, and others versus Union of India, Aadhaar Judgment, 2019. Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies and Benefits Act 2016 was held to be constitutional, but some individual sections violating fundamental rights were struck down. Surjit Singh Thind versus Kanwaljit Kaur. The wife has filed a petition for a decree of nullity of marriage on the ground that the marriage has never been consummated because the husband was impotent. The husband had taken the defense that the marriage was consummated and he was not impotent. In order to prove that the wife was not virgin, the husband filed an application for her medical examination. The court held that allowing the medical examination of a woman's virginity violates her right to privacy under Article 21 of the Constitution. मतलब क्या क्या टेस्ट कराते हैं, वुमेन्स की वर्जिनिटी टेस्ट करवाने लगे और नहीं कुछ मिला तो. People's Union for Civil Liberties versus Union of India, popularly known as phone tapping case. The petitioner was filed by way of a public interest litigation under Article 32 of the Constitution by the People's Union of Civil Liberties, a voluntary organization, highlighting the incidents of telephone tapping in the recent years. एक PIL फाइल की गई आर्टिकल 32 के अंतर्गत. The petitioner has challenged the constitutional validity of Section 5 of the Indian Telegraph Act 1885, which authorizes the central and state government to resort to phone tapping in the circumstances mentioned there. The writ petition was filed in the wake of the report on the tapping of politicians' phones by the Central Bureau of Investigation (CBI). The Supreme Court has held that the telephone tapping is a serious invention of an individual's right to privacy, which is part of the right to life and personal liberty enshrined under Article 21 of the Constitution, and it should not be resorted to by the state unless there is public emergency of interest of safety requires. इसके बाद फोर्थ पॉइंट है राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस. इसमें केस है परमाणु खतरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. It has been held that it is the professional obligations of all doctors, whether government or private, to extend medical aid to the injured immediately to preserve life without waiting legal formalities to be complied with by the police under CRPC. इस केस में ये कहा गया कि कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो या प्राइवेट डॉक्टर हो, अगर कोई इंजर्ड आता है तो उसे सबसे पहले उसे मेडिकल एड देनी चाहिए, ना कि उसे लीगल फॉर्मेलिटीज भरवानी चाहिए. Article 21 casts the obligation on the state to preserve life. It is the obligation of those who are in charge of the health of the community to preserve life so that the innocent may be protected and the guilty may be punished. इसके बाद है bonded labor case system. नीरजा चौधरी versus State of MP. Bhagwati J held that under the Bonded Labor System Abolition Act 1976, it is not enough merely to identify and release bonded laborers, but it is more important that they must be rehabilitated, because without rehabilitation, they would be driven to poverty, helplessness, and despair, thus into serfdom once again.
This is the plainest requirement of Article 21 that the bonded laborers must be identified and released and stably rehabilitated. इसके बाद है right to die. Section 309 of the IPC 1860 criminalizes attempt to suicide with the convicted person facing up to 2 years of imprisonment or fine or both. जो सेक्शन 309 है आईपीसी का वो क्रिमिनलाइज करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड को और इसमें पनिशमेंट भी मिलती है 2 साल की या फाइन या दोनों. इसमें एक केस है पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. अ डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग मिस्टर जस्टिस एम सहाई एंड मिस्टर जस्टिस हंसारिया हेल्ड दैट अ पर्सन हैज़ अ राइट टू डाई एंड डिक्लेयर सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इस केस में ये हेल्ड हुआ कि राइट टू डाई एक पर्सन का राइट है एंड जो सेक्शन 309 ऑफ द आईपीसी है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. द राइट टू लाइव इन सेक्शन आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट नॉट टू लाइव, that is right to die or to terminate one's life. A person cannot be forced to enjoy right to life to his detriment, disadvantage or disliking. The court held that the section 309 of the IPC was a cruel and irrational provision. The court held that the right to life of which Article 21 of the Constitution speaks of can be said to bring in its trial the right not to live a forced life. उन कोर्ट के अकॉर्डिंग कि जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है उसे ये भी बताना चाहिए कि राइट नॉट टू लाइफ भी एक फंडामेंटल राइट है. जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, a 5-judge constitution bench of the Supreme Court has now overruled the P. Ratinam's case and held that right to life under Article 21 of the Constitution does not include right to die or right to be killed. जियानकोर के केस ने जो पी रत्नम्स का केस था उसे ओवररूल कर दिया. द राइट टू डाई इज इनहेरेंटली कंसिस्टेंट विद राइट टू लाइफ एज इज डेथ विद लाइफ. Right to life is a natural right embodied in Article 21, but suicide is an unnatural termination or extension of life and incompatible and inconsistent with the concept of right to life. इसके बाद केस है अनुरा रामचंद्र Sonbhag versus Union of India का. A writ was filed by Miss Pinky Virani of Mumbai claiming to be the next friend of Anna Ramchandran with a prayer for direction to the respondent to stop feeding and let Anna die peacefully. Anna Ramchandra Sonbhag, who was a staff nurse in King Edward Memorial Hospital, Parel, Mumbai, was attacked on 27th November 1973 by a sweeper in the hospital by wrapping a dog chain around her neck and yanking her back with it. It was alleged that due to strangulation by the dog chain, the supply of oxygen to the brain stopped and her brain got damaged. There was damage to cortex or some other part of the brain and brain stem contusion injury with associated cervical cord injury. The incident had occurred about 30 years of her age and she was at the time of the judgment of court 60 years of age. The report submitted by the committee of doctors established by the Supreme Court, it was found that the Anna Sonbhag had some brain activity, though very little. Her parents were dead and her close relatives had no interest in her since she had an unfortunate assault on her. Court held that the passive euthanasia can be allowed in such cases. इसके बाद नेक्स्ट फैसेट है राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर. रूरल litigation and entitlement केंद्र versus state of UP. The court ordered the closure of certain limestone quarries on the ground that there were serious deficiencies regarding safety and hazards in them. A large-scale pollution was caused by limestone quarries adversely affecting the safety and health of the people living in the area. इसके बाद केस है MC Mehta versus Union of India का श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर केस. The Supreme Court directed the company manufacturing hazardous and lethal chemicals and gases posing danger to right to health and life of workmen and working living in its neighborhood to take all necessary safety measures before reopening the plant.
आज की इस वीडियो में हमने 6 फैसेट्स पढ़े। इस नेक्स्ट वीडियो में हम और जो फैसेट्स हैं उनको कवर करेंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट सेकंड था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो से सीखने को मिला होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।